Hello everyone, very good afternoon to all of you. Welcome to Unacademy OPSC. So in the last class, we discussed about some important fundamental rights, discussed about Article 31. Now we'll continue with Article 32, which is called Right to Constitutional Remedies. So before discussing the topic, recently batch course has been started for Assistant Section Officer exam by Unacademy OPSC. So enroll yourself to the batch course. Use the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount of your subscription amount. Apart from that, we are also going to launch new batch courses in the month of January 2021 for the upcoming OPSC 2020 examination. Apart from this, you can also prepare for other government examination which are conducted by the government of Odisha. Apart from OPSC civil service examination, there is the assistant section officer exam conducted both for Odisha High Court as well as for Secretariat. For both the exams, Unacademy OPSC is going to conduct many batches for that. You can enroll to those batches. So other explanations has been given in the description box. You can go through them for more clarification. Now let's discuss about Article 32. 32 is one of the important article of the Indian Constitution, and it is called the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. 32 describes about the remedies. So first let's understand what exactly remedy is. What do you mean by remedy? So whenever we are giving a right to a person at that point of time, we need to give a remedy to that. Let's say those who are late comer to the class, they will not be allowed to the class. Let's say कि गोटे आज गोटे रूल करवा कि लेट आसला क्लास को लेट कहीं क्लास को लेट आसीबेनी एमती गोटे रूल कले मानि नियंतु. So let's say कि next day some people are coming late to the class, then what should be the consequence? जदि हम किसी punishment न रखिबा बा remedy न रखिबा for that कि जो माने late आछंती will not allow them to enter to the class. तो इबला जदि किसी punishment provide न करिबा, then there is no meaning of prescribing rules. In the same way, whenever you are giving rights according to the Indian Constitution of India, it is giving rights to the people or to the citizens of India. And at the same time, we should provide the consequence if those rights are being violated. But this rights को के violate करूची, से rights को के take away करूची, बा abridge करूची, individual करू, government करू, कोनो से organization, institution करू, कोनो से private entity करू, rights are violation किए भी करू. But the thing is that what the government or what the constitution prescribes as its remedies, that matters. यदि हम remedy दौनांदी, then there is no value of the only prescribing the rights, because our rights to the right to equality, all should be treated equally, equal protection of the law. If the state will not obey it or if the state will not implement it, then what? So that is why we have to give remedies along with the rights सहित हमको remedy दबार भी आवश्यकता रही. So 32 article 32 रे remedy ऊपर discussion है जहाँ पे रिट इशू करा जीवा या पर वर्तमान में डिस्कस करिवा. सो आर्टिकल 32 रो नेचर को थोड़ा एग्जामिन करंतु. आर्टिकल 32 इज देयर टू प्रोवाइड रेमेडीज व्हाट फॉर द फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ. ये निजे भी गोटे फंडामेंटल राइट. 32 is itself a fundamental right and it protects other fundamental rights as well. So that is why article 32 is called heart and soul of the Indian Constitution. Had it not been there, then there would not have so much value of the rights which are given in the Indian Constitution. So Article 32 कहूची कि a person has complete authority to approach Supreme Court directly without the way of appeal in case of violation of the fundamental right. यदि कोनोसी परिस्थिति रे कोनोसी लोकर fundamental rights रो violation होची, then we don't need go to the lower court first. जेमते हमर process of appeal थाए, process of appeal अनुसार first a person will approach the lower court, then lower court to district court to high court to Supreme Court. So this is the process of appeal. ए way रे गोटे लोक step by step judiciary को approach करि परिबो to get his rights re-established. But in this case, especially when fundamental right is violated, at that point of time we don't need to
approach the Supreme Court through the process of appeal. Rather, directly we can approach High Court or we can approach the Supreme Court. To approach the Supreme Court, Article 32 provides the authority to us. By using Article 32, we can directly approach the Supreme Court. And by using 226, we can approach the High Court. So 32 रे आमे देखिले कि हमको authority मिलुची Supreme Court को approach करिया ପାଇଁ when the fundamental right is violated. Now the question is how the Supreme Court will re-establish the fundamental right which has already been violated. To re-establish that, Supreme Court will issue an prerogative jahaku writ boli कहा जाए in legal terminology, that is called writ. And basically there are 5 type of writs we have or which has been mentioned in the Indian Constitution: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. Discuss kariba ame gote pore gote. Let's first discuss about the most important writ, that is habeas corpus. Habeas corpus कहले ame kon बुझंती? Habeas corpus basically ये गोटे Latin term and it means to have the body. कहार बॉडी ना कोनोसी समय रे जदि कोनोसी लोक को कही illegally detain करके रखि थाए, at that point of time habeas corpus can be issued. habeas corpus writ को एठी सुप्रीम कोर्ट इशू करिवे कहा अगेंस्ट रे ना जो लोक डिटेन करके रखिथिबो. मानि नंतु मु गोटे लोक को डिटेन करके रखिछि, इल्लीगल फोर्सफुली ताको डिटेन करी मो घर रखिछि, at that point of time habeas corpus writ will be issued against me. What for? Because there is a grave threat of the person who is illegally detained and there is gross violation of Article 21 and 19 of that person. Right to freedom of movement violation, then 21 right to life and personal liberty of that person violation. ये दीटा रे violation होइथिबा कारणरू 21 and 19 at that point of time से लोकर राइट्स अछि दीटा में देखले ना violate ला 19 and 21. सो ताकू रीएस्टैब्लिश केमति करा जिवो? तो रीएस्टैब्लिश करिया पई एठी सुप्रीम कोर्ट रो सहारा नवस. सुप्रीम कोर्ट रो सहारा नेला परे habeas corpus सुप्रीम कोर्ट इशू करबा अगेंस्ट मी बाय यूजिंग आर्टिकल 32. अर्थात से लोकर 19 and 21 वायोलेट हैला एंड 32 को यूज करी बोथ 19 and 21 को अगेन रीएस्टैब्लिश करा गला. एंड व्हिच फंक्शन इज दिस? दिस इज फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो फंक्शन. Alok Pradhan join. Alok, very good afternoon to you. So read, I mean देखले कि the first is the most important one, that is habeas corpus. So habeas corpus रा गोटे important characteristics अछि कि habeas corpus can be issued against both public authority as well as the private individual. यदि कौन से पब्लिक अथॉरिटी का को इलीगली डिटेन करके रखि छ, लेट्स से कि पुलिस डिपार्टमेंट बा पुलिस का को इलीगली डिटेन कर रखि छ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 32 यूज करी habeas corpus पुलिस अगेंस्ट रे बा ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रे इशू करा जाय पारे. इंडिविजुअली यदि मु रखि छ का को देन मो विरुद्ध रे मध्य habeas corpus इशू करा जाय पारे. तो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि habeas corpus व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल. लास्ट टाइम हम पढुतले कि preventive detention is always lawful because it is constitutional in nature and it doesn't take away or abridge any of the fundamental rights. So at that point of time habeas corpus cannot be issued because the detention is completely lawful as well as legal. The second is the detention should be by a competent court. It should be by a competent court. Competent court means competent रो माने होची जहा पाखरे कैपेबिलिटी अछि, जहा पाखरे कैपेसिटी अछि. यदि से बंद करि रखुची बा कोनोसी डिटेंशन करिछि देन इट इज अलाउड, सेतरे कोनोसी प्रॉब्लम नाही. सो इट इज रिलेटेड टू habeas corpus. habeas corpus को बुझिया पई मु आ गोटे एग्जांपल दउछि. लेट्स से वर्तमान देखुतिबे प्रॉब्लम कि प्राइवेट हॉस्पिटल माने करे जेतबेले कोनोसी लोकर डेथ हेइ जाउछि एंड डेथ हला परे यदि से तार पेमेंट ड्यूज किछि बाकी रखिछि पेंडिंग रखिछि देन द अथॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल देन दे आर नॉट अलाउड टू dispose the dead body. So dead body तार relative मानको दउनाथि. At that point of time can writ be issued? Yes, at that point of time also writ can be issued because a writ means I am talking about the habeas corpus. Habeas corpus, yes, it can be issued because the detention of the dead body is illegal in this sense. The detention of the dead body is illegal in this sense. एठी कहि पारे कि सर से लोकर तो लाइफ नहीं से तो डेड हे सारिछि. सो डेथ हेला परे भी habeas corpus इशू करा जाय परिबो. habeas corpus माने जीवंत हो बा मृत हो गोटे बॉडी को प्रेजेंट करिया पे कोर्ट आगरे निर्देश दियंती. सो habeas corpus जेतेबेला ए रीट इशू हुए ऑटोमेटिकली ये रीट अनुसार हमें लाइव बा डेड बॉडी दीटा जाक कोनोसी वे बॉडी को हमको प्रेजेंट करिया को
पड़े सो आर्टिकल 32 यूज करी से जगह हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बा से मेडिकल अथॉरिटी अगेंस्ट रे रिट इश्यू करि परिबा दिस इज ऑल अबाउट habeas corpus then let's discuss about another writ that is mandamus mandamus means we command एठी command किए दिए the command obviously the command will be given by the court because एठी right को establish करिया पई तो writ ही इश्यू होची तो writ इश्यू किए करचंती कोर्ट करचंती सुप्रीम कोर्ट एठी इश्यू करचंती आर्टिकल 32 अंडर रे सो एठी 32 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करिवे mandamus रिट बा जहा कोंदी वी कमांड काहा को करिवे ना गोटे पब्लिक ऑफिशियल को करिवे कोन पई करिवे ना जदी कोनोसी समय रे से पब्लिक ऑफिशियल तांको ड्यूटी डिस्चार्ज करि नथांती बा ड्यूटी डिस्चार्ज करिया पई मना करि थांती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम mandamus कैन बी इश्यूड अगेंस्ट हिम तांको अगेंस्ट रे mandamus को इश्यू करा जाई पारिबो या व्यतीत रिट ऑफ mandamus कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल सो ये अगेन एविडेंट कि जदी mandamus को हमें पब्लिक इंडिविजुअल सॉरी पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट रे यूज करछंती ताला को प्राइवेट अगेंस्ट रे केमति यूज करा जाय परिबो जदी पब्लिक अथॉरिटी तांकर पब्लिक फंक्शन पब्लिक ड्यूटी न करछंती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस वी हमें कोन करंती कि सेठी mandamus कोर्ट इश्यू करंती सो प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट रे बा प्राइवेट डिपार्टमेंट अगेंस्ट रे याकू इश्यू करा जाय परिबो नाही and when the duty is discretionary and not mandatory duty जते बेले mandatory हि नथिबो discretionary हेतिबो से समय ये इश्यू करा जाय पारिबो so mandamus I hope you are clear with the concept of mandamus बुझी पाले समस्ते आलोक बुझियला the next is prohibition the next issue is writ is the prohibition alok is asking sir for political detained is the writ can be issued रिट को इश्यू करबो कोचो पॉलिटिकल डिटेंशन पाई पॉलिटिकल डिटेंशन माने को टाइप रो एग्जैक्ट डिटेंशन एठी कोचो जदी डिटेंशन को गोटे जिंस देखिवार अछि हमको कि इलीगल अछि कि नै जदी ये इलीगल अछि देन habeas corpus को एठी इश्यू करा जाय परिबो कोनोसी असुविधा नै जदी लीगल अछि जदी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा हिची बा कोर्ट ऑर्डर द्वारा हिची बा लीगल अथॉरिटी मानक द्वारा हिची एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम habeas corpus को at that point of time habeas corpus को यूज करा जाय परिबो नाही लीगली हितले किछि प्रॉब्लम नाही बट इलीगल हितले से जगह रे पॉलिटिकल हो बा पॉलिटिकल न हो प्रत्येक जगह रे इश्यू करा जाय परिबो द नेक्स्ट इज द प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मींस टू प्रोहिबिट कहा को like J&K like Jammu and Kashmir the case is different political हुए एठी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन थिला प्रिवेंटिव डिटेंशन जोटा हम करथले 22 अंडर रे तो 22 एठी काम करथला प्रिवेंटिव डिटेंशन पाई तापर नेक्स्ट हाउस अरेस्ट एटा अलगा कथा एठी थिला habeas corpus एठी इश्यू करा जिवो नाही काहे कि ना जे भी एठी जो मन को हाउस अरेस्ट करा जाय छिबा जो मनकर मूवमेंट ऊपर रोक लागि थिला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एठी करथिला आइदर कोर्ट ऑर्डर रे बा किछि गोटे स्पेशल लॉ द्वारा बा पार्लियामेंटरी लॉ द्वारा करा जाय परिबो किछि असुविधा नै इलीगल डिटेंशन करि परिबो कि का जबरदस्ती जने आसे पढियो को पाखु मता जबरदस्ती रखि देबी बा तुम जाई छ गोटे दुकान को जिंस किनिया को से तुमको जबरदस्ती रखिला डिटेंशन करि किडनैप करिया पई बा रैंसम डिमांड कला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटी habeas corpus इश्यू हो बुझि पालो the next is the prohibition prohibition no meaning होची to prohibit कहा को prohibit but कहा को forbid करिवो ना it is issued by a higher court to the lower court जेते बेले lower court तांको jurisdiction बाहर को जाई कोनोसी प्रकार डिसीजन नबा को जानती at that point of time तांको अगेंस्ट रे प्रोहिबिशन इश्यू करा जाय पारिबो प्रोहिबिशन के करंती बेसिकली प्रोहिबिशन हाई कोर्ट माने हायर कोर्ट गोटे लोअर कोर्ट अगेंस्ट रे करि पारिबे ताको हमें प्रोहिबिशन बोली कहंती तांकर जुरिसडिक्शन बाहर को जाई कि जेतबेले करिवे ताको कहंती प्रोहिबिशन माने नियो हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा गोटे केस ऊपर डिस्कशन करछन बा केस ऊपर राय दोछन जो केस ओडिशा भितरे क्रिएट हेनी बेंगल भीतर क्रिएट हिच तो ओडिसा रो हाई कोर्ट रो जुरिसडिक्शन दैट इज को टर्मिनस विथ द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा केवल ओडिसा रो जियोग्राफिकल टेरिटरी भीतर होतिबा केस मानन को डिस्पोज करि परिबा एडजुडिकेशन प्रोवाइड करि परिबे ता बिस तो बाहर कोर्ट रे बाहर जगह हेतिबा केस को नुहे जदि ए जगह रे हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा करंती देन प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा एंड बाय हुम बाय द सुप्रीम कोर्ट इट इज सुप्रीम कोर्ट ले हायर कोर्ट हाई कोर्ट हेले लोअर कोर्ट अगेंस्ट रे सुप्रीम कोर्ट बा हायर कोर्ट जेतबेले प्रोहिबिशन इशू करिवे तार अर्थ होची कि ये पर्टिकुलर केस को निजे डिस्पोज करि परिबेनी बा एडजुडिकेशन करि परिबे नाही ये केवल लोअर कोर्ट नुहे इट कैन आल्सो बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मानक केस रे भी प्रोहिबिशन को इशू करा जाय पारे द नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिट इज सर्च्योरारी रो मीनिंग होची टू बी सर्टिफाइड
किए क्या सर्टिफिकेट दबो ना अगेन प्रोहिबिशन ऑफ सर्च्युरारी पीसी प्रोहिबिशन एंड सर्च्युरारी मन रखिबे कि इट इज रिलेटेड टू जुडिशियरी हायर जुडिशियरी बा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एठी रिट दीटा टाइप रो रिट को इशू करि पारिबे सर्च्युरारी एंड प्रोहिबिशन सर्च्युरारी रे कोन हुए जदी लोअर कोर्ट कौन प्रकार राय देला बेले भर्डिक्ट देला बेले जदी कौन प्रकार भूल हो जाइछि बा इफ देयर इज एनी एरर ऑफ द लॉ रो एरर रहि जाइछि बा जदी सेठी जुरिसडिक्शन नाही बा एक्सेस जुरिसडिक्शन यूज करछन्ते कोर्ट से समय रे सर्च्युरारी यूज करा दे पारिबो जुरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रत्येक कोर्ट रो गोटे जुरिसडिक्शन थाय कि ए कोर्ट एत्ति कि ए केस पर्यंत हैंडल करि पारिबे माननियंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी दंड देई पारिबे कैपिटल पनिशमेंट देई पारिबे बट in confirmation from the high court confirm न कला पर्यंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देई परिबे नाही मानि नियंतु कोनोसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी ऑर्डर देई दिचंती विदाउट कन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट रो बिना कन्फर्मेशन जदी फांसी दंड देई दियंती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देथिबा ऑर्डर बा देथिबा वर्डिक्ट रो को सर्च्युरारी बा सर्टिफाइड करा जाय परिबो बेसिकली सर्च्युरारी रे गोटे लोअर कोर्ट रो ऑर्डर को वर्डिक्ट को पोस्टमार्टम करा जाय पोस्टमार्टम माने लोअर कोर्ट रो वर्डिक्ट को एग्जामाइन करा जाय कि से कोर्ट पाखरे वेदर द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट और नॉट माने लीगल अथॉरिटी से कोर्ट को पाखरे अछि ना लीगल अथॉरिटी से कोर्ट को पाखरे नाही कोन पई ना से केस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज करिया पई बा से पनिशमेंट प्रोवाइड करिया पई जेमिति मु एग्जांपल ले देली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जदी हाई कोर्ट रो बिना कन्फर्मेशन ने कैपिटल पनिशमेंट बा फांसी देचंती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर्च्युरारी यूज करी हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को स्क्वाश करि परिबे सो इट दीटा भीतर डिफरेंस देखंतु प्रोहिबिशन एंड सर्च्युरारी प्रोहिबिशन ने कोन होतला इन प्रोहिबिशन व्हाट हैपेंड प्रोहिबिशन ने प्रोहिबिट करूथले डिस्पोज होबा पूर्वरु केस दबा पूर्वरु हमें प्रोहिबिशन यूज करके मना करथले तळ कोर्ट की नै तळ कोर्ट एथरे केस दे माने एथरे डिसीजन देई परिबे नाही सो प्रोहिबिशन वाज प्रिवेंटिव इन नेचर बट सर्च्युरारी रे कोन हला केस डिस्पोज हला परे राय देई सारिला परे बा वर्डिक्ट आसी सारिला परे लोअर कोर्ट ऊपरे हाई कोर्ट बा हायर कोर्ट एठी रोक लगौचंदी को कारण पई ना ताकू एग्जामाइन करचंती कि से कोर्ट पाकर से अथॉरिटी अछि ना नाही तो सर्च्युरारी इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव पूर्वरु डिस्पोज होबा पूर्वरु एवं डिस्पोज होबा परे सर्च्युरारी इशू करा जाई पारे बट प्रोहिबिशन इज ओनली प्रिवेंटिव ता माने केस चालिबा पूर्वरु प्रोहिबिशन यूज करा जाई पारिबो then the fifth writ is called quo warranto means by what authority basically गोटे लोक जेतोले पब्लिक ऑफिस को क्लेम करे तार लीगैलिटी बा तार अथॉरिटी को एग्जामाइन करिया पई quo warranto इशू करा जाय मानि न कहा को आज भल लागिला से जाई डीसीपी ऑफिस कटक डीसीपी ऑफिस रे जबरदस्ती पसी कहू मु डीसीपी हेली आज तो एई जगह रे quo warranto इशू करा जिवो इट मींस by what authority the person will be asked by whom by the court कौन पत्र देबो एटी कोर्ट कौन पत्रबे ना बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अज्यूम द पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस सो पब्लिक ऑफिस को अज्यूम करिया पई देयर आर सर्टेन रूल रेगुलेशंस बा किछि क्राइटेरिया थाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थाए जो लोक इस क्राइटेरिया को फुलफिल करबोनी देन द पर्सन इज नॉट अलाउड से जगह रे से लोक अलाउ होबनी सो को वारंट सेतबेले इशू करा जाय जेतबेले पब्लिक अथॉरिटी कोनोसी प्रकार पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट रे जेतबेले लीगल क्लेम हम करंती बा से लीगैलिटी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन किसी लोक से ऑफिस रे रही परिबो ना रही परिबोनी सेतबेले को वारंट इशू हुई I hope you are clear with these 5 type of writs: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. This has been given in Article 32. So 32 रे एते प्रकार writs दिया जाइथिबा कारणरु Article 32 is called heart and soul of the Indian Constitution, or this is called fundamental of all the fundamental rights, because it is itself it is a fundamental right and it protects other fundamental rights as well. This is all about Article 32. Now let's discuss about Article 33 of the Indian Constitution. Article 33 of the Indian Constitution. एठी कोन कहै जाउची 33 okay alok you understood it good 33 देखिबा देखंतु जते हमें राइट्स डिस्कशन कले फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन कले ये पर्यंत ये सब राइट्स भाबो जदी पैरामिलिटरी फोर्सेस बट आर्म्ड फोर्स बा मिलिटरी फोर्स एमान को दिया जाय ताहले कोन हबा हमें कहया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें दबा तो से माने ताकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को न मानी किछि सीक्रेसी को मेंटेन न करी बा सीक्रेसी को एक्सपोज कर दी पारंती बा जेहेतु से मानकर ड्यूटी मींस द नेचर ऑफ देयर ड्यूटी इज obviously correspondent to the unity and integrity of the nation or security of the country at that for that purpose what is given कि semanku
जो टाइम रे दरकार से टाइम रे फंडामेंटल राइट दिया जिवो, and whenever it is not required the fundamental rights may be taken away from them, and it has been given in article 33 of the Indian Constitution. So fundamental rights of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies can be taken away, or restriction can be imposed upon them, upon their fundamental rights by the parliament. जदि parliament एठी समानकर fundamental right उपरे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती ताहले हमें ताको मना करि परिबानी कि नहीं पार्लियामेंट आक ऊपर राइट्स माने समानकर फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करि परिबे बोली इट हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये कारण पई इंडियन पार्लियामेंट किछि एक्ट क्रिएट करथिले, एनाक्ट करथिले 1950 रे इंडियन आर्मी एक्ट, 1950 रे अगेन इंडियन नेवी एक्ट एज वेल एज एयर फोर्स एक्ट, ता सहित पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट भी एनाक्ट करथिले. ये सब कोन पई ना समानकर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करिया पई बा समानकर फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया पई बेसिकली. So this is related to article 33 of the Indian Constitution. Then article 34. 34 is related to मानि नंतु गोटे एरिया जो एरिया रे मार्शियल लॉ इंप्लीमेंट हेची बा मार्शियल लॉ कंटिन्यू होची गोटे एरिया रे, तो स्टे जगह रे बा स्टे एरिया रे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नुहे, दैट इज सब्जेक्ट टू आरंभ कहतली कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो ताको रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोली कहा जाय. फंडामेंटल राइट ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेई पारिबा. ठीक अछि. सो एटी 34 आर्टिकल कहूची कि जदि कोनोसी रीजन डिक्लेयर हेची बा से रीजन जदि मार्शियल लॉ इंप्लीमेंट हेची एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम fundamental rights of the citizens that can be violated. इस जगह fundamental right violate करा जाई पारिबो, and for that a person cannot approach the Supreme Court or High Court for the re-establishment. ये 34 रे डिस्कस हेची. Then article 35, another important article of the Indian Constitution. So article 35 हमें देखले ए पर्यंत फंडामेंटल राइट्स कि some of the fundamental rights they are self explanatory and they are self executable, so माने automatically execute ही परिबे. But apart from that there are some other fundamental rights which are not self executable, बा से माने automatic execute ही परिबे नाही. ताकू execute करिवा पई पार्लियामेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करिवा को पड़िता है. जेमिति कि आर्टिकल 17 abolition of untouchability, untouchability को बंद करिवा पई, स्टॉप करिवा पई इन इंडिया पार्लियामेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ एंड जेमची एससी एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट बा मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट. सो डिफरेंट टाइप रो लॉ आनिवर अर्थ कोन ना 17 को हम एठी एम्पावर करछुंदी बा 17 को एठी पार्लियामेंट इंप्लीमेंट करछुंदी बाय एनैक्टिंग डिफरेंट लॉज. इन द सेम वे आर्टिकल 35 एठी कहउछंती कि रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट फंडामेंटल लॉ को सॉरी फंडामेंटल राइट्स मानकू अमेंड करिवार अधिकार केवल पार्लियामेंट पाखरे अछि. So parliament has the power to make laws with respect to the implementation of the fundamental rights. जदि fundamental rights को implement करिया पे कोनोसी लॉ आवश्यकता हुए at that point of time the authority goes to the parliament. It means parliament is the sole authority. काहे कि एठी clear cut explanation दिया गला because in India we have a federal polity, we have two governments, one government at the center which is called central government and another government at the state which is called state government. Because हमें federal polity अछि हम पाखरे दीटा टाइप रो गवर्नमेंट हम पाखरे exist करूची. तो ए सब कारणरू जेमती सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भितर डिस्प्यूट क्रिएट न हो, डिस्प्यूट क्रिएट न हो पाई वी हैव द 7th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 7th शेड्यूल ले यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट अछि. यूनियन लिस्ट ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनै परिबो, स्टेट लिस्ट ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनै परिबो एंड कॉन्करेंट लिस्ट रे दिया जेतो सब्जेक्ट मानक ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कैन फॉर्मुलेट लॉज. So in this case what happens, it discusses about the implementation of the fundamental rights. ये कुछ कि fundamental right को implement करिया पाई जदि कोनोसी लॉ आसे then who should be the real authority for that, state government or the central government? Definitely the parliament should legislate laws. हमें state government को ये अधिकार दे परिबा नाही because we have many states and we have many legislatures as well. तो से माने कौन करिवे मन इच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि परिबे चाहिए. ये कारण पई कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहू इंडिया रे बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर को बेसी फॉलो करूची. यूनिटरी फीचर माने सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अधिक अथॉरिटी दिया जाए ताको यूनिटरी फीचर बोली कहा जाए. एंड जेतबळे स्टेट गवर्नमेंट मान को जदि हम फीचर देथांते ताल ये एठी फेडरल गवर्नमेंट बा फेडरल स्ट्रक्चर बोलिया को होई परथांते. सो यूनियन गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट हाथ रे एठी अधिक पावर रहूची बा याकू अधिकार 35 अनुसार दिया जायची
फंडामेंटल राइट मान को इम्प्लीमेंट करिया पई जदी कोनोसी लॉ आवश्यकता पड़े इंडिया रे देन पार्लियामेंट विल फॉर ओनली द पार्लियामेंट विल फॉर्मुलेट दोस लॉज देन Parliament has the authority, according to Article 35, Parliament has the authority to empower other courts to issue writs. तो जो writ ऊपर मु discussion कली एटी आउथर कहूची कि writ ए पर्यंत इंडिया रे दीटा कोर्ट इश्यू करि परिबे द फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट एंड द सेकंड वन इज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुसार रिट इश्यू करि परिबे एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 अनुसार रिट इश्यू करि परिबे बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 226 या भीतर गोटे छोटो डिफरेंस अछि कोन 32 itself is a fundamental right 32 itself is a fundamental right 226 is not a fundamental rights so 32 यूज करी हम सुप्रीम कोर्ट जाउ छन रिट इश्यू पई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ए जगह रिजेक्ट करि परिबे नाही बट आर्टिकल 226 यूज करी तो हम हाई कोर्ट को जाउ छन हम फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिया पई हाई कोर्ट मे एक्सेप्ट और मे नॉट एक्सेप्ट यहला प्रथम कथा द्वितीय कथा जदि हम देखिबा सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू केवल फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन पई करि परिबे अदर राइट्स रो वायोलेशन पई नुहे बट हाई कोर्ट 226 यूज करी फंडामेंटल राइट्स समेत अदर लीगल राइट्स मान को एनफोर्स करिया पई मध्ये रिट इश्यू करि परिबे ये कारणरू रिट इश्यू कैपेसिटी ऑफ द हाई कोर्ट इज wider than the writ issue capacity of the supreme court high court कर writ issue करिवार अधिकार बा क्षमता supreme court कर writ issue करिवार क्षमता ठरो अधिक कोन पई ना supreme court केवल fundamental right पई writ issue करि परिबे whereas high court can issue writs both for fundamental rights as well as for ordinary legal rights ये दीटा जिंस एठी मन रखिबे द नेक्स्ट रहला फंडामेंटल राइट रा अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करिवार अधिकार कहा पाखरे अछि पार्लियामेंट पाखरे ना स्टेट लेजिस्लेचर पाखरे ये गोटे सिंपल क्वेश्चन आमे आपको आंसर एई भावर करि परिबा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करिवार अधिकार अछि कहा पाखरे ना सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे केमिति ना कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट रो प्रोसेस आर्टिकल 368 रे डिस्कस हेछि आर्टिकल 368 दीटा कथा कहूची प्रथम कथा कि द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the power has been given to the parliament the power has been given to the parliament को दिया जाय छी and the second is the process therefore माने को प्रोसेस रे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाय परिबो किछि पोर्शन अछि जहा को सिंपल मेजॉरिटी रे किछि पोर्शन अछि जहा को स्पेशल मेजॉरिटी रे एंड आउ किछि पोर्शन अछि जहा को स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट माने ताको अप्रूवल भी दबा दरकार बा स्टेट लेजिस्लेटर से लॉ भी पास होवर आवश्यकता रही छी तो एटी 368 दीटा कथा कहला प्रथम वाला प्रोसेस ओ प्रोसेस रे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाय परिबो एंड द्वितीय कथा कहला अथॉरिटी पार्लियामेंट को दिया जाय छी सो जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवार अथॉरिटी पार्लियामेंट पाकर अछि इट इज क्वाइट ऑब्वियस कोन ऑब्वियस इट इज ऑब्वियस कि फंडामेंटल राइट्स रो अमेंडमेंट रो अधिकार केवल पार्लियामेंट पाखरे ही अछि स्टेट लेजिस्लेचर करि परिबे नाही सो देखंतु स्टेट लेजिस्लेचर वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन को छुई परिबे बा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबे नाही सो फंडामेंटल राइट्स आर देयर इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन देन हाउ कम द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी एलिजिबल टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स यदि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट करि परिबे नाही ताहाले फंडामेंटल राइट्स को केमते अमेंड करि परिबे फंडामेंटल राइट्स को मते ये अमेंड करि परिबे नाही so this is how the fundamental rights should be amended ये पर्यंत हमें डिस्कस कले नेक्स्ट यदि हम क्रिटिसिज्म देखिबा फंडामेंटल राइट्स मानकर देन फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म इज द एक्सेसिव लिमिटेशन फंडामेंटल राइट्स मानकर फंडामेंटल राइट्स मींस दे आर सब्जेक्टेड टू मेनी एक्सेप्शंस दे आर सब्जेक्टेड टू मेनी रेस्ट्रिक्शन क्वालिफिकेशन हमें देखले कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट दे आर क्वालिफाइड इन नेचर एंड बेसिकली देखिबा जदि आर्टिकल 21 पाखरे ही किछि बेसी किछि रेस्ट्रिक्शन नाही बट अदर आर्टिकल मानक पाखरे बहुत रेस्ट्रिक्शन अछि सो एही कारणरू याको गोटे एक्सेसिव लिमिटेशन बा एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स द नेक्स्ट इज दीज आर ओनली पॉलिटिकल राइट्स ये केवल पॉलिटिकल राइट्स बा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करूची सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एथरे किछि इंक्लूड हे कि नाही बेसिकली इकोनॉमिक्स राइट गुडा को अछंती हमर डीपीएसपी रे एंड डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर द नेक्स्ट इज many times you will finding many fundamental rights which are not clear means not clear with their idea ये ambiguity create करूची बा indefinite डेफिनेशन दोची गोटे डिफाइन डेफिनेशन दोनी कि एक्जेक्टली यार मीनिंग या बा ये माइनॉरिटी को ठीक भाबरे डिफाइन करूं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन द वर्ड याकू ठीक भाबरे डिफाइन करूं पब्लिक ऑर्डर याकू ठीक भाबरे डिफाइन करूं तो एभले अनेक टर्मिनोलॉजी हमें पाइबा फंडामेंटल राइट्स मान करे जे कंप्लीटली वेग बा एम्बिग्यूटी क्रिएट करूछंती बा ठीक भाबरे जहार एक्सप्लेनेशन नाही नेक्स्ट
they are not permanent. There are many fundamental rights. जेमति कि हमें कहबा right to property. Right to property was there in article 19(1)(f) and 31. ये दीटा रिलेटेड थिला तो ये 1975 रो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हटी गला. सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट एज पर द रिक्वायरमेंट एको चेंज करा जाई परछि, अमेंड करा जाई परछि, डिलीट करा जाई परछि. जेम रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा जेतलो आर्टिकल 15 and 16 पढौतली कहितली कि 15 clause 6 was added, 16 ने clause 6 was added for they were inserted to give implementation to the economically weaker section. 10% reservation in the union government, central government ro job रे प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे पढिया पाई मध्य तो याको अमेंडमेंट करा जाई परला. सो ये कहूछ कि विभिन्न जिंस एथरे एसोसिएटेड हेकि रहउची बा फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बेसिकली परमानेंट, एमान को चेंज करा जाई परची एज पर द रिक्वायरमेंट. द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम पीरियड रे भी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली. सो नेशनल इमरजेंसी रे फंडामेंटल राइट्स गुडा को सस्पेंड करा जाई परिबो केवल आर्टिकल 20 एवं 21 को छाड़ी देले. ये सब कारण पाई ये भी गोटे हमें क्रिटिसिज्म बोली फंडामेंटल राइट रो कहि परिबा, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. देन the remedies, they are also expensive because a person has either to approach the high court or to the supreme court. So it is not possible for each and everyone to approach high court or supreme court. जने रूरल रीजन आसीची बा गोटे दूर जगह रु आसीची, सो ताकू दिल्ली जाई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिवा बा स्टेट हाई कोर्ट को अप्रोच करिवा बेसिकली कष्ट होई थाए. So these are related to fundamental rights. यहाँ पर हमें डिस्कशन कले, we have a very comprehensive discussion related to fundamental rights. article 12 रो स्टार्ट करी we have discussed up to article 35. समस्त याको भलो भाबरे पढिबे fundamental rights को, because एमित्रे हम प्रिपरेशन पाई भी important for civil service examination. And apart from that, as your rights, because it is being conferred to you by the Indian Constitution, being an Indian citizen, these rights are always with you and those rights should be protected. and निजे बुझिले से rights गुडा को निजे बुझिले ही protect करि परिबे, निजे rights को निजे protect करि परिबे. सो फंडामेंटल राइट्स को बुझंतु. जदि 12 रु 35 भितर कहर किछि भी डाउट अछि ताले मते कमेंट सेक्शन में आपन एठी लिखि परिबे. आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन. मु तार आंसर देबी बा आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. ओके, या पर नेक्स्ट सेशन मानकर मध्य मु कंटिन्यू करिवे. आज मध्य सेशन अछि जहा जोथि हम सुप्रीम कोर्ट ऊपर डिस्कशन करबा. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड प्रत्येक सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन न किछि इंपोर्टेंट प्रोविजन, इंपोर्टेंट आर्टिकल को मु यूट्यूब सेशन में ओपीएससी रो अनअकैडमी चैनल ले डिस्कस करिवे आ कंप्लीट करी मध्य. या व्यतीत यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड अनअकैडमी ऐप रे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण स्पेशल क्लास करि परिबे. अनेक गुडे स्पेशल क्लास अछि, प्लस कोर्स मध्य आपण जॉइन करि परिबे जोठी बैच कोर्स डिफरेंट एग्जाम पई थाए. यू कैन एनरोल टू दोज बैच courses and you can use the referral code EGOS EASYOOS, so that you'll be getting 10% off upon your subscription amount. Apart from that, other explanations has been given in the description box also. You can go through the description box and you can download the Unacademy app. So see you in the next session. I mean next session में सुप्रीम कोर्ट ऊपर डिस्कस करिवा. आज संध्या 6 रे अछि. सो थैंक यू एवरीवन. जो माने फंडामेंटल राइट रो अन्य सेशन देखि नांती, आई विल रेकमेंड कि से माने अदर सेशन मानको देखंतु एवं फंडामेंटल राइट्स को निजर राइट्स को भलो भाबरे बुझंतु. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे.